Hello, hello, friends and students. It's a difficult time for all of us. It's a time to stay with each other in our homes. It's a time to show our strength and commitment. You know, it's not the first time India has to face a epidemic or pandemic. India has faced it, defeated it, and most probably this time too we'll do it. It may take some days, but it's really important that all of you should stay home. And in an effort to continue with that, what we could do is the teachers of our university in various departments are recording, and as well as in law faculty, we are recording our lectures and talks to you so that you can study at your home. Feel free to share it with your friends and classmates and others so that the study part of it is not discontinued. Before I go with my talk, I just have one thing to say. In these days, हो सकता है आप में से किसी को बाहर भी जाना पड़े सामान लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, तो प्लीज़ वेयर मास्क. अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहनिए और पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाइए, क्योंकि कोई एक ही वाहक हो सकता है इस बीमारी को आपको घर में लाने के लिए. जस्ट वन इंसिडेंट इज़ मोर देन इनफ. So I hope you will be following that. And one thing more, like, stay positive. We are going to defeat it soon. As I have seen the data of BBC, the line of infected person with reference to the number of testing increased in India, it's started to flattening a bit. Even though it's an initial ratio, but still there is a ray of hope for us, and I believe in hope. So, my talk to you, coming to my topic of discussion, my talk to you would be on the relationship between fundamental rights and directive principles of the state policy. Throughout the years and since when the constitution has been made, this is a talking point. And not only in the constitution of India, anywhere in the world where there are two classification of rights. Like, if you see human right, there is two classification of right. One is called as civil and political rights, जो जनरली सिविल या राजनीतिक प्रवृत्ति के होते हैं. सिविल या राजनीतिक प्रवृत्ति के वो अधिकार हो गए जिसमें आपको सिविल स्वतंत्रताएं मिलती हैं या राजनीतिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं. राजनीतिक स्वतंत्रताओं का सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता. और कुछ अधिकार होते हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, डेवलपमेंटल राइट्स, जिसको आप सेकेंड जनरेशन राइट थ्योरी भी बोलते हैं. दो आई डू नॉट बिलीव इन दिस जनरेशन थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट, बट देर आर सर्टन राइट जो कि सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रवृत्ति के होते हैं. अधिकांश नवीन संविधानों में ये देखा गया कि उन्होंने दो तरह के अधिकारों के खंड बनाए. देर आर टू सेगमेंट्स. वन इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, अनदर वन इज सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस समय के संविधानों की चर्चा करें जो उस समय बने, जैसे कि भारत का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वियतनाम का संविधान, श्रीलंका का संविधान, तो उन सभी देशों के संविधान में देर आर टू पार्ट ऑफ राइट्स. आवर जेनिंग्स ने इसको डायकोटमी ऑफ राइट्स बोला है. तो देर आर टू पार्ट ऑफ राइट. वन इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकेंड वन इज सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स. इन दोनों की भाषाओं को देखिए. अनुच्छेद 14 नकारात्मक से शुरू होता है. स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. वेराज जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी देखते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव है ना. उनमें न या नहीं, या राज्य ऐसा नहीं करेगा ऐसा नहीं लिखा है. राज्य ऐसा करेगा ये लिखा हुआ है. कोई भी अधिकार देखिए, फ्री लीगल एड देखिए, या फिर लिविंग वेजेस को देखिए, बहुत चर्चा में रहा कॉमन सिविल कोड देखिए, आर्टिकल 44, तो सभी सकारात्मक है. क्या कारण होगा कि एक नकारात्मक दिए गए, एक सकारात्मक दिए गए? दूसरा, इन कारणों पे आने से पहले दूसरा, सारे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का enforcement is also a fundamental right under Article 32, and because of that they become justiciable, जिसको आप बोलते हैं न्याय योज्यीकरण. Whereas directive principle of the state policy are not enforceable. You cannot go in courts and enforce directive principle of the state policy.
That does not mean they do not get enforced. Please understand this thing. That does not mean directive principle of the state policy are not getting enforced today. But when the constitution was made, they were specifically kept not to be enforceable in courts. Reason is again because they are positive obligations. State is waiting for the resources to be concentrated in the hands of state so that it can provide free legal aid, so that it can provide living wages, so that there is a situation ready for the application of uniform civil code. Maybe we have not reached till there, but you see, banning of triple talaq, or Shah Banu's judgment of providing maintenance to a Muslim widow, Muslim wife, that shows that we are moving towards common civil code. There is a element of commonness, there is a element of एक जैसे कानून बनने लगे हैं दोनों तरफ, दोनों धर्मों में, जो कॉमन सिविल कोड की तरह दिखा रहा है. तो दो चीज़ें क्लियर हुई. पहली चीज़, मूल अधिकार नकारात्मक क्यों है. दूसरी चीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी सकारात्मक क्यों है. पहली चीज़. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़, मूल अधिकारों को जस्टिसेबल क्यों बनाया गया. और चौथी चीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को जस्टिसेबल क्यों नहीं बनाया गया. इसमें नीचे आप अपने सवाल भी डाल सकते हैं. अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आपका उन सवालों का आंसर आपके कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करने की कोशिश करूँगा. एंड आई वुड लव क्वेश्चंस, एज आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स इन द क्लास टू. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस. नाउ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी संविधानतः इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उनको इन्फोर्सेबल बनाया जा सकता है. और ये यात्रा भारत के संविधान की, it's one of the most astonishing journey, that how we converted directive principle of the state policy within the meaning of fundamental right. So in nutshell, मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक दूसरे से अलग बनाए गए. एक को नकारात्मक, दूसरे को सकारात्मक. मूल अधिकार जहाँ इगैलिटेरियन स्टेट की बात करते हैं, सामाजिक रूप से एकीकृत राज्य की बात करते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं. और हम उससे आगे बढ़ रहे हैं. मैंने बताया था कि किस तरह से वी हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पुलिस स्टेट टू अ वेलफेयर स्टेट टू अ सर्विस स्टेट. नाउ वी आर ब्लीडिंग टुवर्ड्स अ सर्विस स्टेट बिकॉज स्टेट इज प्रोवाइडिंग all the rights which are there in directive principle of the state policy, not as a reward but as a service. So state has transformed into a service state. Modern jurisprudence में इसको service state बोला गया. खैर, इस यात्रा की शुरुआत ऐसे नहीं हुई. इस यात्रा की शुरुआत बहुत अलग तरीके से हुई. मैं आपको एक केस पर ध्यान दिलाना चाहूँगा जो 1951 में हुआ, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात भी करी होगी. था केस चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. So in that era, when the question was asked कि क्या अगर मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट में है, तो यानी अगर किसी एक का इन्फोर्समेंट करना है तो हम किसको इन्फोर्स करेंगे. जैसा कि उस समय की संवैधानिक परिस्थितियां आप समझ रहे हैं. ऑफ कोर्स द कोर्ट टुक द साइड ऑफ fundamental rights and ignored directive principle of the state policy, but that was in 1951. You see, I have told you so many times that how 42nd, 44th Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, ADM Jabalpur versus Shivakant Shukla and Maneka Gandhi has changed constitutional jurisprudence. And the best example for that, when we talk about the relationship between fundamental rights and directive principle of the state policy, is in 1973, year 1973, Supreme Court 1473, as you have guessed it right, it's Keshavananda Bharati versus State of Kerala. And what Keshav did? Keshav interestingly said that if there is a conflict between fundamental right and directive principle of the state policy, that means civil and political rights and socio-economic rights, we will go for the path of integration. हम उन दोनों को में से किसी एक का इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, हम उन दोनों को इंटीग्रेट करके इन्फोर्समेंट करेंगे. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. हाउ इट इज इंटरेस्टिंग दैट अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो अनुच्छेद 14 का हिस्सा है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, तो हम दोनों को इंटीग्रेट करके एक रास्ता बनाएंगे, यानी fundamental right shall not overpower directive principle of the state policy. This change was very evident all over the world. I think I've given a case of Dr. Grootboom case in South Africa that also followed that approach. When they integrated two different set of rights, one enforceable, not enforceable, and blend it together and make the way for integrated approach, or most commonly we call it an approach of integration. So that was era number 2. So era number 1 was conflict, era of conflict. Sajjan Singh, Champakam Dorai Rajan, you know, you can find out numerous of cases from 1951, rather 1950 to 1973. When there was a conflict between fundamental rights and directive principle of the state policy, fundamental rights shall prevail, and directive principle of the state policy shall not prevail. But you see the impact of 42nd, 44th Amendment, Indira Nehru Gandhi, and so on. By 1973, we were ready to take up an approach of integration, where fundamental rights and directive principle of the state policy could be integrated and merged together. So this was era number 2. The most important point in the history of Indian constitutional interpretation is not era number 2. It's rather the third era, the era number 3, where in a case, Supreme Court of India has observed that when there is a conflict between fundamental rights and directive principle of the state policy, fundamental rights shall not prevail, era number 1 shall not prevail. Integration, it's a good option, but in certain fundamental directive principle of the state policy, certain directive principle of the state policy shall prevail over certain fundamental rights. So it's a reversal of era number 1, Champakam Dorai Rajan. The case was Minerva Mills versus Union of India. And Minerva Mills versus Union of India has given preference to Article 39D to prevail over Article 14, 15 and 16. ये जो परिवर्तन आया, इसने धीरे धीरे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व को अधिभावी बना दिया मूल अधिकारों के ऊपर, और यह भारत के संविधान का एक स्वर्णिम दौर है. इसमें ध्यान रखिए, केवल यही हिस्सा नहीं था. आर्टिकल 14 का वाइडर इंटरप्रिटेशन, जिन लोग मेरी क्लास अटेंड करते हैं उनको पता होगा, मैंने उनको बताया था द न्यूअर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, मनेका ईपी रोयप्पा के बाद आई हुई डॉक्ट्रिन, और जिस तरह से उसने 14 को एक्सपैंड कर दिया फेयरनेस के लिए. हजारों टेस्ट, इंटेलिजिबल डिफरेंस, या नेक्स्ट विद द ऑब्जेक्ट, नेचुरल जस्टिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 14. The expansion of Article 19, when we have interpreted Article 19 with reference to 19.2 to 19.6, the reasonable restriction, and the super or mega expansion of Article 21, which has provided so many numerous of rights, and merger of these three articles has given courts scope to interpret all, and if not all, then almost all of the directive principle of the state policy. And I repeat it to you, all, or if not all, almost all of the directive principle of the state policy within the meaning of fundamental rights. एंड इस वजह से भारत का जूरिस्प्रूडेंस एक मेगा जूरिस्प्रूडेंस के रूप में नजर आया. एक बहुत अच्छा उदाहरण देखिए, राइट टू एजुकेशन, जो कि मूलतः मानव मूल अधिकार नहीं था, लेकिन 21A में उसको मूल अधिकार बनाया गया. प्रेरणा कहाँ से मिली? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ऐसा, ये वो रास्ता बनाते हैं जिन पे मानव मूल अधिकार आबाद गति से भ्रमण कर सके. और एक्चुअली में जो वर्तमान अप्रोच है वो ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज सामाजिक आर्थिक न्याय बेहद ज़रूरी है. राजनीतिक न्याय अपने आप आ जाता है अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना है, और इसी ने भारत के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस को जन्म दिया. मैं कुछ चीज़ें आपसे रेफ़र करने की कोशिश करूँगा. अगर आपके पास किताबें हैं तो आप पहली चीज़ ये देख लीजिए कि आप MP जैन से इस
इस डायमेंशन को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से उसने फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करके एक तरीका बनाया कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। अगर आपके पास एच एम सीरवई है देन आप एनालिसिस पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलरली एनालिसिस ऑफ केशवानंद भारती, जो कि उसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के इंटर रिलेशनशिप को समझाया गया है, जब इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात आती है। मिनर्वा मिल्स के लिए आई वुड रेफर, प्लीज आई विल आस्क यू टू गो थ्रू दिस केस लॉ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and you will be able to identify that how 39 was given preference over certain fundamental rights. So that is it from my side on this issue. My next video would be on a book review. I hope you'll follow that. And in a way, it's a good time for you to study and self-study and go deep into books and study much more and learn much more. Please ask your questions. I would really happy to answer that on YouTube. Please stay at home. Please stay safe. Please be there with your family. Your elderlies. Please don't let them go out, particularly the elderlies. And take care. I hope this COVID would be over. And just one thing. Do you also think it's a Chinese virus? Like Donald Trump? Thank you.